Assalamu alaikum, everyone. I believe we have some presentations today. So, first of all, I will be introducing my team. That is Mahat Tariq, me, myself, Usman Ahmed Saeed, Farooq Nadeem, Suhaib bin Kamran, and Mohammad Fazan. So, our topic is swarm intelligence. So, I would go with the first definition. What is swarm intelligence? In short, जो मैं आपको सबसे ज़्यादा है ना कहते हैं इन आसान अल्फाजों में बताऊं, the basic definition of swarm intelligence is to combine individual power to achieve a greater objective that would not be possible by any individual through a interactive system, which allows close feedback loops among individuals. Well, Mahat, can you move forward? Yeah. So now the question arises कि क्या इंसान भी ये काम कर सकते हैं? Yes, in recent times इंसान भी ये काम कर सकते हैं. People also use swarm technologies. As the internet spread across the globe in the last 2 decades, online community and platforms serve as an swarm intelligence rooms. Decisions that are quickly made and are made through these intelligence models are very accurate and predicting what is going to happen around 75 to 80%. Well, इसके पीछे की ideology क्या थी? No, Mahat, can you go back? Yeah. So what is the ideology behind swarm intelligence? Well, to solve complex problem and to do much more. Well, by creating a swarm mind. The ideology is simply to use the collective power of every individual being involved in the activity to generate forecasts, make decision, or achieve any given objective that is possible. This influences the masses as the decision is made from the masses as well. चलें ये भी अच्छी बात है. But does this method exist naturally? Yes, it does. This method is mostly common in birds, bees, fishes, or even ants. One of my favorite examples of swarm intelligence would be of ants, because I think there are countless of videos on social media where I've seen they use their collective power to achieve something that is very remarkable. Moving on. Well, why did human lack this ability before if we are using right now? So the simple answer is that initially human lacked subtle connection that other species used to establish tight feedback loops among members, because of which swarm intelligence was not very known to humankind. With the use of high-speed internet and you can say interconnected and deeply connected networks, humans can interact with anyone in the world, and using this we can develop a closed system that allows for feedback among members that will enable swarm intelligence. Okay, that's good. So what can we accomplish from this system? In very short terms, a lot. From predicting sports and financial trends to assessing the effectiveness of advertisement and movie trailers. Real-time swarms have been to shown signify or amplify, you can say, intelligence. Well, what does Mahat, can you move forward? Yeah. So आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि स्वॉर्म इंटेलिजेंस तो एक वैसी नॉर्मल सी चीज है जैसे हम पोल या सर्वेज लेते हैं. वेल, नॉट एग्जैक्टली. देयर आर थ्री डिफरेंट things that differentiate a swarm intelligence system from a regular survey and poll. The first being the closed feedback loop, where feedback is allowed, uh, where the feedback is allowed among individuals to to explore more options. The second being interactive control system, which allows every member to be deeply connected. And the third being active member, where they are treated as a part of an active member of the system rather than a passive member in a survey. So sometimes the popular answer and the most optimized answer is different, which differentiates the polls surveys from a swarm mind slash system. The most important thing to know about swarm system is that it treats participants as an active member of an interactive control system with feedback loop that enables the group to explore a set of options and converge on solutions that maximize their collective conviction.
From now onward, Farooq would be taking on the presentation and showing you some videos. Farooq? Yes, ma'am, for explaining what swarm intelligence is. Now let's discuss how scientists and the engineers got their inspiration from nature, from the tiny insects or the fishes that work together in a group to achieve complex tasks. Let's take honeybees for example. अगर हम honeybees के brain size compare करें to that of a human, we'll obviously find that it is very smaller in size. Yet they are able to achieve complex tasks which even humans find hard to solve. Now, you must be wondering, honeybees are merely an insect, and what is it that they need to solve? What is the problem that they need to solve? But let's just say they are very picky when it comes to choosing their location for their homes. They are picky because they want their home location to be ideal in a sense that it is based on various factors. Like it needs to be ventilated enough to stay cool in summers. It needs to be insulated enough to stay warm in cold winters. It needs to be protected from rain. Yet it needs to be closer to water source and the food source. And there are many other factors that it depends on, that their home location depends on. So for a single honeybee to find the ideal location, it is impossible. Even for a human to consider so many factors, it is impossible to choose the ideal location. Yet scientists, according to a research, have stated that they are able to do so almost 80% of the time. So how do they do it? They do it via collective intelligence. They send their scouts around 30-mile radius, and then they choose the location after communicating with each other. They have their own ways of communication, and after they reach a conclusion, they choose their home. इसके अलावा honeybees के अलावा अगर हम ants को देखें तो ants have their own ways of finding the shortest path. और भी बहुत सारे लिविंग स्पीशीज हैं जो कि सॉर्म इंटेलिजेंस के थ्रू अपने वेरियस इश्यूज को सॉल्व करते हैं. फिशेस की अगर हम एग्जांपल लें तो फिशेस जो हैं वो they stay connected with each other. They move in a group to stay away from predators. They are able to reduce the energy that they need to consume in order to move via just via their collective intelligence. Now that we understand what nature has to offer in this area, let's discuss what it has to offer in our real life applications via technology. And for that, Sohaib is going to take over from here. Okay, so thank you so much, Farooq. So, sir, I'll be taking forward with the collective power of swarm intelligence, AI, robotics, and computations. So, next slide, please, Mahal. तो बेसिकली साइंटिस्ट ने किया क्या है कि उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया है. दे ऑब्जर्व डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि फरूक और उस्मान ने एक्सप्लेन किया कि बीज, फिशेस और फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स जो हैं वो जिस तरह से एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस के थ्रू काम करता है. तो साइंटिस्ट रियलाइज कि हम इंसान जो है उसके थ्रू बहुत अच्छी कंप्यूटेशन पावर और बहुत अच्छे एल्गोरिथम्स के साथ हम काफ़ी अच्छा वर्क कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट हम काफ़ी complex problems को जल्दी solve कर सकते हैं. So that is how scientists have taken what they observed from nature and applied it to the machines. तो collective intelligence जो है computational systems और different algorithm rules के through काफ़ी amplify की जा सकती है और locally collaborate करके एक दूसरे के साथ एक surrounding environment form की जा सकती है जिसके अंदर काफ़ी बड़े और complex problems बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम के मतलब एक बहुत कम टाइम में और without any hassle solve किया जा सकता है. Next slide में प्लीज. तो एक रोबोट कैसे एक सॉर्म के अंदर यूज अप किया जा सकता है. तो एज यू कैन सी इन द वीडियो, और आगे मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा. तो बेसिकली रोबोट सॉर्म कंसिस्ट ऑफ टाइनी सिंपल इंडिस्टिंग्विबल रोबोट्स जो कि इक्विप्ड होते हैं एक सेंसर के साथ, और उनका एक काइंड ऑफ एक
बैकएंड होता है जो कि डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होता है और उनके अंदर उसके सारे डेटा लॉग हो रहा होता है. सो वन रोबोट कलेक्ट्स एंड शेयर्स डेटा विद द अदर्स इन द ग्रुप, और विद दैट दे कोलैबोरेट, and with the collective intelligence and AI algorithms, they form to make homogeneous groups, और वो एक साथ function करता है जिसके थ्रू वो different tasks complete कर सकता है. So such firms can combine the knowledge and insights of millions of independent self-sustaining agents in small robots को हम voids भी कहते हैं, और to form and converge on a single unified decision. So इस तरह से हम different robots को different swarm के अंदर use कर सकते हैं और उनके according different चीजें कर सकते हैं. So Mahad, तो I'll be telling you about an experiment जो कि WIS Institute at Harvard University ने किया था to just experiment the extraordinary power of swarm intelligence in robotics. Next slide, please. तो इस प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली जो रिसर्चर्स थे उन्होंने रोबोटिक्स सॉर्म्स को डिफरेंट यूज केसेस के अंदर यूज करने की कोशिश करी, और उन्होंने कोशिश की कि दे कुड incorporate programmable autonomous artificial robot swarms for search and rescue missions, construction efforts, environmental issues and medical applications. उन्होंने different use cases use किए थे जिसके थ्रू वो ये टेस्ट करना चाहते थे कि किस बेसिस पे या किस हद तक हम रोबोट्स का यूज कर सकते हैं इन कलेक्टिव इंटेलिजेंस एंड swarm इंटेलिजेंस. तो जो वेस्ट इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने लो कॉस्ट मोबाइल रोबोट्स जिनको उन्होंने किलोबॉट्स नेम किया, दे मेड them move as schools of fish, और उसके अकॉर्डिंग they tried to make different patterns और different testing behaviors उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश करी. So Mahat, can you play the video please? Previous website, previous slide के ऊपर जो लिंक है उसको प्ले कर दो. तो these are the kilobots जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम रिसर्च जो उनका एक था, and this is how they formed different patterns. So if we move forward in this video, so this is how they were moving a shape of a starfish और different जो इनके पैटर्न्स थे उनको देख रहे थे. तो these are the kilobots जो कि एक बहुत छोटे minute robots थे, they had a sensor in them, और जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आते हैं they have a kind of a light changing, और उनके अंदर इस तरह के पैटर्न्स स्टोर किए जाते हैं and they are programmed. तो जिस तरह से भी डिफरेंट रोबोट्स एक दूसरे को जज करते हैं, एक दूसरे से कलेक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट वो अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं ड्यू टू डिफरेंट ग्रेडियंट्स और एज फॉलोइंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के थ्रू. और ये एरर प्रोन रोबोट्स होते हैं. तो एक स्पेशल किलोबॉट जो वो एक किसी स्टार्टिंग पोजीशन पे रख दिया जाता है एंड दे आर स्विच्ड ऑन. तो जो उनके अंदर प्रोग्रामेबल डेटा स्टोर किया जाता है उसके अकॉर्डिंग दे स्टार्ट मूविंग और वो डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म करते हैं. तो ये एक ऐसी रिसर्च थी जिसके थ्रू जो रिसर्चर्स थे वो ये फाइंड आउट करना चाहते कि एक स्वॉर्म किस तरह से फॉर्म किया जा सकता है. तो जैसे एक स्कूल ऑफ फिश होता है कि डिफरेंट फिशेस एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए डिफरेंट पैटर्न्स तो नहीं बट जिस तरह से वो कोप अप कर रहे होते हैं और मूव कर रहे होते हैं, उसी तरह ये स्वॉर्म रोबोट्स इन सेवरल आवर्स, बिकॉज ये बहुत छोटे रोबोट्स हैं और इनकी कंप्यूटेशन पावर बहुत स्लो है, उसके अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट डिजाइंस डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म कर पा रहे थे इन अ वेरी compatible time. So Mahat, can we move back to the presentation? Move forward. So there are several insights जो हम इन सारे different experiments और different researches से हम find out कर सकते हैं. So that was के the field of robotics was focused on developing intelligent robots that worked alone. जैसे हम प्रीवियस ट्रेडिशनल देख सकते हैं तो उस ट्रेडिशनल भी नहीं, रिसेंट टाइम्स में ऐसा ही हुआ है कि आपके पास डिफरेंट रोबोट्स हैं जो कि बहुत सिंगल हैंडली काम करते हैं. लाइक इफ यू कैन लुक फॉरवर्ड टू डिफरेंट कैफे रोबोट्स जो एज अ वेटर काउंट कर रहे थे, यू कैन सी डिफरेंट रिसर्च रोबोट्स जो कि एआई के अंदर काम करते हैं. दे बीइंग यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन टू मेक बेटर इंसाइट ऑन दैट एंड ब्रिंग सम चेंज. लेकिन जिस तरह से हमारे एल्गोरिथम्स चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से हमारा दौर चेंज हो रहा है, according to that many algorithms of swarm intelligence have been solving different challenging problems with their uniquely dynamic self-sustaining capabilities and collective behaviors. तो इसके थ्रू we can know कि हम एक collective intelligence के थ्रू हम जो है
डिफरेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और कलेक्टिवली हम काम कर सकते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को काफ़ी जल्दी भी सॉल्व करेगा, काफ़ी इफेक्टिव एफिशिएंटली भी सॉल्व करेगा। तो जिस जिस तरह हमारे पास एक रुझान बढ़ रहा है, वी आर गेटिंग 5G नेटवर्क्स एंड this is also enabling robots to collaborate and adding to the explosion of robot swarms, जिसके थ्रू हम और नई डिफरेंट रिसर्चेस के अंदर जा सकते हैं और डिफरेंट swarms regenerate कर सकते हैं. So the use cases will quickly turn into real world problems deployments with far reaching benefits that we can now only imagine कि हम different और तरीकों से आगे move on कर सकते हैं. Next slide. So that was all from my side, and now Mahad will be taking it from this side. Thank you. Thank you, Sohaib. Am I audible? Okay, thank you, Sohaib. So now I'll be moving on with the advantages and disadvantages of swarm intelligence. So basically, when we look at the advantages of swarm intelligence, so firstly, we have the robustness. So the tasks are basically finished regardless if the few agents fail. So because it is a combined and a collective system, so even if some systems or some individuals fail in the task, the collective effort maintains that the task is achieved. Then it is self-organizing. Roles are not predefined, and it is a natural definition of roles. So the next thing we have is adaptation. The swarm can adapt to the predetermined and the new stimuli and the new environment very quickly and very easily. And then it is a decentralized system. There is no central control, and which allows for rapid and local collaboration. So like we studied in this course, a decentralized system is the new paradigm in the social computing. So this is a very important factor. Moving on, we can see that the system is highly scalable, as the same architecture or technique that is applied to few subjects can be replicated to a larger group as well. The system is highly flexible, as subjects or individuals can be added or removed within time. A smaller system can be mimicked for a larger system as well, although a minimum threshold must be maintained for swarm intelligence. When we look at the disadvantages of swarm intelligence, we see that it is highly unpredictable. The complex systems of swarm intelligence can lead to unforeseeable results and future. It is also very time consuming, given that complex systems and complex swarm intelligence systems are contains rich hierarchies, which can take a lot of time. Then we have that it is difficult to exercise control over a swarm since it is highly decentralized, and a lack of central control can make swarms very inefficient as well. It is also very difficult to understand the sequential system and to understand the complex systems of swarm intelligence. Moving on, we have the common algorithms that are used in swarm intelligence. There are many, but we'll focus on few right now. So first, we have the ant colony optimization algorithm. Like Farooq explained before, कि ants किस तरह आपस में communicate करते हैं to find the shortest path. तो इसी को basically इसी से inspiration लेके ये algorithm design किया गया है. So what this algorithm does is that it finds the shortest path in the traveling salesman problem, which is a very famous problem, which finds the shortest path between two cities or two locations. So what this does is that it optimizes the problem by finding the best path on a weighted graph. So, and it incrementally builds solution by moving on in that graph. Then we have particle swarm optimization. Particle swarm optimization is a computational method that optimizes by iteratively moving on in a search space or in a candidate solution. हमारे पास काफी सारे solutions होते हैं. Iteratively ये जो particles होते हैं, different swarms होते हैं, वो उनके through move कर रहे होते हैं to find the most optimized solution. Moving on, I would like Faizan to explain the future use cases of swarm intelligence. Thank you, Mark. So I will be moving with future of swarm computing, swarm robotics. So the idea of swarm robotics takes inspiration from natural swarms. Natural swarms are autonomous, no direct communication in between them, self-organized, coordinated, and incorporated. Next slide, please. So the uses of swarm robotics. Nanotechnology is becoming one of the most promising applications of swarm robotics, first being nanorobots in medicines.
Scientists are finding ways to develop nanorobots technologies that would be able to kill many diseases. For example, killing cancer via nanorobots is one of the main tasks that scientists are aiming to achieve. Second is nanorobots in armed forces. US military uses these robots for tasks that are not possible for humans or are very difficult to accomplish. For example, the transportation of heavy products, disposal of chemicals, or searching into places where humans may have no access. Third is snake robots. Swarm robotics can play an efficient part in surveillance systems. Areas that are not too dangerous or not too reachable for humans can be monitored via swarm robots. Next up, Mahat will be taking over for the activity. Okay, so next up we have a small activity. So I'll just share the link. Okay, so now we have studied कि swarm intelligence होता क्या है, तो हम basically उसे थोड़ा सा apply करने की कोशिश करते हैं. Yeah, so over here we can see कि हमारे पास बहुत long equation दी हुई है, right? तो अगर कोई एक single बंदा इसे solve करने की कोशिश करेगा तो उसे काफी time लग जाएगा. So let's try to do it in a group. So just give me a second. Okay, so मैंने इसे यहाँ पे एक नीचे basically आप लोग को provide कर दिया है. And if you guys can, contribute और यहाँ पे if you guys can write the answer, कोई एक एक करके कोई part 1 कर ले, कोई part 2 कर ले. इस तरह अगर हम लोग divide कर लें तो let's try and see कि कितनी जल्दी हम लोग इसे solve कर सकते. You all guys can contribute और जो भी इसका आंसर निकालना चाह रहा है. Good, we're almost there. Okay, so I think we're done with this. So moving on, तो हमारे पास ये answers आ गए. तो next thing we have this. अगर इसको भी आप लोग जल्दी से solve कर लें. Great. Next हमारे पास तो हमने ये answers निकाल लिए. So next we can solve this as well. And similarly, last few steps. Last step में हमें बस ये calculate करना है and we have the answer. So collectively हम लोग ने सबने मिलके ये काफी कम time में कर दिया है. Even though अगर ये हम लोग एक कोई बंदा से कर रहा होता तो इसे बहुत ज़्यादा time लग जाता, right? So that is basically a small concept of swarm intelligence. कि basically हम सब मिलके combine करके collectively कोई काम करें और collectively अपनी intelligence को इस्तेमाल करें. So we can achieve a huge task very simply and very easily within a short time. And that was all from my side. Thank you so much. All right, thank you very much. Now, are there any question answer session for this presentation? Yes, sir, we're open to any questions from the class. Are there any questions from the class? Any comments? You can add your comments, questions, feedback, anything on the chat if you like. Right, so, okay, we'll move on to the next part of this presentation, which is the feedback. All right, it seems there's no second group today. So I'll provide my comments on this presentation. Thank you very much, Mahad and the group, for this wonderful presentation. I really liked the presentation. The activity was quite creative, like how to convey the concept of swarm intelligence in form of an activity. So I think that was a very creative use of activity to convey this information. And I also like the remark that when you try to make this link between swarm intelligence and social computing, because obviously you know that this is an area which overlaps with many domains, especially artificial intelligence. So it is one of the algorithms there. But the characteristic that it shares with social computing is that it's a general phenomena where a large number of inputs are combined to produce the results. So in social computing, this is quite common that actually this is a defining characteristic of social computing application, that the input comes from a large number of sources, right? So it could be some kind of content that users generate. And we saw that in our first few sessions that user-generated content is one of the key factors that distinguishes traditional applications from social computing applications. And the second dimension that we looked at in social computing was that computing that is
based on a large number of inputs. So one aspect of social computing was to support social processes, but the second aspect of social computing was to compute something with the help of social algorithms. So this could be robots, as we saw today, or it could be even people. It links back to the phenomena of wisdom of crowds that we studied early on, right? And where we did this small calculation of finding out the length of a line segment on your screen display, right? Or so this is quite common, this phenomena of wisdom of crowds that we say, or we say swarm intelligence, or sometimes known as collective intelligence. So the premise is that when we have inputs from a large number of inputs, the output can be more accurate, faster, and better than any of the individual combined. तो जैसे रोबोटिक में आपने अभी देखा स्वाम इंटेलिजेंस में कि एक अकेला वो जो माइक्रो रोबोट है किलोबॉट जिसका नाम था, वो खुद अकेला बहुत सारी चीजें अकम्प्लिश नहीं कर सकता, पर जो एक कलेक्टिव फॉर्म में आते हैं then they are able to accomplish a lot of things. और जैसे नेचर की आपने एग्जांपल्स दी एंट्स की और हनी बीज की, this is exactly true. It's amazing if you have any interest in these natural phenomena, you'll be amazed at what level of sophistication is shown by these colonies, because they actually become so intelligent that sometimes we call them a collective organism. So instead of a small ant treating that as a single organism, we treat the whole colony as an organism. और यही कॉन्सेप्ट जो है इसको फिर हम एक्सटेंड भी काफी लोगों ने किया इसको. फॉर एग्जांपल आप जो है एक कलेक्टिव जो है अगर उसको उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करना चाहें, यू कैन स्टडी देम इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स. ठीक है, तो इसलिए इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन चलानी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें आपको किस तरह से ग्रुप की जो डायनामिक्स हैं उसको किस तरह से आप मैनेज करेंगे. जैसे स्वाम इंटेलिजेंस ने आज अपने प्रेजेंटेशन में देखा कि इट्स नॉट इजी टू कंट्रोल द स्वाम, क्योंकि स्वाम जो है वो अपनी जो बिल्ट इन इंटेलिजेंस है उसकी बेसिस पे वो चलता है, और जो उसकी आउटपुट आती है वो कलेक्टिवली आती है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल की बेसिस पे नहीं आती. तो सोशल कंप्यूटिंग के अंदर बहुत सारे जो फिनोमेना है, जैसे वायरल वीडियोस है या कैंपेन्स हैं, या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आजकल जो हो गया वो हो गया ओपिनियन फॉर्मेशन. ठीक है, उसके पॉजिटिव आप उसको भी यूज कर सकते हैं साइट पर जाके, और उसको नेगेटिवली भी कर सकते हैं. मोस्ट रिसेंट एग्जांपल जो है वो फेसबुक की है, एक नेगेटिव एग्जांपल, जब उन्होंने जो एक बहुत लार्ज स्केल पे जो है मैनिपुलेशन की ऑफ opinion, public opinion, so that it was, according to some people, it was able to affect the results of the elections. ठीक है, तो वो पूरे elections जो हैं वो आप देखें, आप सोशल कंप्यूटिंग की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होगी कि एक मेजर कंट्री के इलेक्शंस के रिजल्ट्स को आप स्वे कर सकते हैं in your direction. ठीक है, using the same phenomena जैसे आज हमने जो पढ़ा स्वाम इंटेलिजेंस का. तो उसमें भी यही होता है कि जब आप एक लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को जब इस तरह से आप फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, और आज ये ऑब्वियसली हम नेगेटिव एग्जांपल हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं. नेगेटिव एग्जांपल में ये होता है कि आप जो फीडबैक शेयर करते हैं वो कंट्रोल्ड होती है. यू डोंट provide all the feedback to every member, but you provide a subset of the feedback to every member. तो वो उसको कस्टमाइज करके दिए जाते हैं. उससे रिजल्ट ये होता है कि ओवरऑल जो कलेक्टिव रिजल्ट है वो उसको आप एक डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि इसको आप पॉजिटिवली भी इसको बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली जो है एक
पेमेंट स्कीम जो है वो लॉन्च की है, ठीक है। पेमेंट स्कीम आप कहेंगे कि ये सोशल कंप्यूटिंग में कैसे आती है, वो इसलिए आएगी क्योंकि जो इसकी इनपुट्स होंगी, ठीक है, वो पूरी सोसाइटी से आएंगी इसमें, इस सिस्टम में, ठीक है। और उससे क्या होगा कि उससे जो है जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी तरफ हम मूव करेंगे, पूरा कलेक्टिवली विल मूव मोर टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी, जो कि अभी इस वक्त हम दूसरी किसी अप्रोच से पूरे सिस्टम को हम मूव नहीं कर सकते हैं टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। हमारे सिस्टम में जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। हमारे पास इसने इस किस्म के लॉज जो हैं वो लॉज हैं, हमारे पास लॉज की जो इनहेरेंट वीकनेस होती है वो ये होती है कि वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में जो है वहाँ पे इशू आता है। टेक्नोलॉजी और ख़ासतौर पे जो सोशल टेक्नोलॉजी है वो इसी इनहेरेंट वीकनेस को एक्चुअली ओवरकम करती है, क्योंकि ये वर्क की इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे करती है। ये इज नॉट दैट समबडी टेल्स यू टू डू दिस इन दिस पर्टिकुलर वे, बल्कि इट अलाउज यू टू डू थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे, उसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं होता तरीका करने का, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, इसकी बिल्ट इन हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने आजकल जो है जो बिटकॉइन से रिलेटेड जो एडवांसमेंट्स हैं, बिटकॉइन भी एक तरह की सोशल टेक्नोलॉजी है, बिकॉज उसमें भी बहुत सारे लोगों की इनपुट चाहिए होती है एंड देन इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर वगैरह वगैरह। और उसका भी जो है ट्रस्ट फैक्टर जो है वो अगेन बिल्कुल सोशल कंप्यूटिंग का जो मेन पैराडाइम है उसके बेसिस पे इट्स नॉट द होल पावर इज नॉट वेस्टेड इन वन सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है। दैट्स व्हाई द ट्रस्ट इज एक्चुअली provided by the technology itself rather than the institution, क्योंकि ट्रेडिशनल जो पैराडाइम्स होते हैं उसमें जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आपको ट्रस्ट प्रोवाइड करता है, जैसे बैंक है या सेंट्रल बैंक है या किसी कंट्री की गवर्नमेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द ट्रस्ट। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रस्ट जो है वो इरोड हो सकता है बहुत जल्दी, ठीक है। अगर कोई इंफॉर्मेशन जब मिलती है लोगों को कि जिससे कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन जिसमें किसी कोई स्कैंडल टाइप की चीज आपको नजर आती है, तो उससे ट्रस्ट जो है वो बहुत जल्दी जो है वो इरोड हो जाता है, जिसकी बेसिस पे वो सिस्टम चल रहा था पहले, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या करती है कि वो ट्रस्ट को जो है वो ऑटोमेट कर देती है। ट्रस्ट इज नॉट बेस्ड ऑन सम इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, बल्कि ट्रस्ट कम्स फ्रॉम द वे टेक्नोलॉजी इज इम्प्लीमेंटेड। तो इसी से जो मैं रिलेटेड बात कर रहा था कि जो दूसरी बिटकॉइन से जो रिलेटेड करेंसीज हैं लाइक इथेरियम और दूसरी, उनके अंदर ये होता है कि उसमें जो टर्म हम यूज करते हैं वो है कि ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कि जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करेंगे तो वो पेमेंट ऑटोमेटिक जो है वो एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चली जाएगी। इट वुड नॉट डिपेंड ऑन who's the individual, who's the person who's verifying whether all the conditions of the contract have been fulfilled, and vice versa, अगर कोई condition miss होगी उसमें से तो भी जो है पेमेंट और नहीं होगी किसी भी तरीके से। तो ये जो है ये से उसके एल्गोरिथम के अंदर ही जो है वो बिल्ट इन होता है, तो वहां से आपको ट्रस्ट वहां से मिलता है। तो स्वार्म इंटेलिजेंस जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है फ्रॉम सोशल कंप्यूटिंग पर्सपेक्टिव कि जब आप इस तरह की सोशल कंप्यूटिंग सिस्टम्स बनाते हैं जिसमें बहुत सारी मल्टीपल सोर्सेज से जो है आपको इनपुट मिलती है, तो वहीं पे आप जो है अगर पॉजिटिव एल्गोरिथम्स उसके अंदर बिल्ट इन करेंगे तो यू विल बी एबल टू मूव द कलेक्टिव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो इट विल बिकम अ वेरी मेजर फोर्स फॉर चेंज इन सोसाइटी। उसमें आप पॉवर्टी एलिवेशन के तौर पे भी से यूज कर सकते हैं इस टाइप के एल्गोरिथम्स को, उसको एजुकेशन फैलाने के लिए भी आप कर सकते हैं, उसको आप हेल्थ कलेक्टिव हेल्थ इंप्रूव करने के लिए भी उसको आप कर सकते हैं। इसी तरह से जो ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम्स की और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंडिविजुअल्स की, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए किया जा सकता है। तो दिस इज वन वेरी बिग पोटेंशियल ऑफ सोशल कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस दैट मस्ट बी लुक्ड इनटू, ठीक है। अभी तक जो है हमने कॉन्सेंट्रेट किया है
on commercial interest, which is quite understandable. ठीक है, जो सबसे पहले जो है जो भी इन्वेंटर होता है या एंटरप्रेन्योर होता है, वो देखते हैं कि वो जो है इस डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ पे उन्हें पर्सनल लेवल पे फायदा होता है। लेकिन सोशल कंप्यूटिंग जो है वो पर्सनल लेवल के अलावा सोसाइटल लेवल पे भी बहुत सारे फायदे में जो है पहुंचा सकते हैं इसमें। जैसे अभी हमने थोड़े से एग्जांपल्स लिए, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इस टाइप की जो है इसके अंदर पोटेंशियल बिल्ट इन है इसमें सोशल कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस में। So you being the student of social computing applications must look at other aspects also besides the commercial ones. Okay, commercial aspect एक है, which is good, it's not bad, it's a good, उससे economic activity generate होती है और उससे जो है वो economy जो है वो आगे बढ़ती है, so it's very positive. लेकिन उसके साथ साथ there are other dimensions also which must be looked into. और आई थिंक ये जो स्वार्म इंटेलिजेंस के जो अगर आप एआई के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको उसकी एक डिफरेंट डिस्कशन मिलेगी, लेकिन अगर आप उसको सोशल कंप्यूटिंग के लेंस से आप देखेंगे स्वार्म इंटेलिजेंस को, तो आपको बहुत सारे नए आइडियाज मिलेंगे कि वो किस तरह से कितने डोमेन्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। सो आई रियली लाइक द प्रेजेंटेशन टुडे एंड दीस वर माय कमेंट्स, and since we don't have the other presentation, that's why we can stop here today, and I hope all of you have filled out the evaluation feedback, and if you have not done that, please do that as soon as possible. So that's all from my side. Thank you very much, especially the group that presented today. Allah Hafiz, everyone.